start. It may be that in some cases the authority may feel that the ends of justice would be met by demoting the officer concerned rather than dismissing him. Stop. An order of dismissal passed by the appropriate authority and capped with it cannot be said to take effect unless the officer concerned knows about the said order and it is otherwise communicated to all the parties concerned. Stop. If it is held that the mere passing of the order of dismissal has the effect of terminating the services of the officer concerned, various complications may arise. Stop. If before receiving the order of dismissal the officer has exercised his power and jurisdiction to take decision or do acts within his authority and power, would those acts and decisions be rendered invalid after it is known that an order of dismissal had already been passed against him? Stop. Would the officer concerned be entitled to his salary for the period between the date when the order was passed and the date when it was communicated to him? Stop. These and other complications would inevitably arise if it is held that the order of dismissal takes effect as soon as it is passed, though it may be communicated to the officer concerned several days thereafter. Stop. It is true that in the present case the respondent had been suspended during the material period, but that does not change the position that if the officer concerned is not suspended during the period of inquiry, complications of the kind already indicated would definitely arise. Stop. We are therefore reluctant to hold that an order of dismissal passed by an appropriate authority and kept on its file without communicating it to the officer concerned or otherwise publishing it will take effect as from the date on which the order is actually written out by the said authority. Such a order can only be effective after it is communicated to the officer concerned or is otherwise published. Stop. When a public officer is removed from service, his successor would have to take change of the said office, and except in cases where the officer concerned has already been suspended, difficulties would arise if it is held that an officer who is actually working and holding charge of his office can be said to be effectively removed from his office by the mere passing of an order by the appropriate authority. Stop. In our opinion, therefore, the High Court was plainly right in holding that the order of dismissal passed against the respondent on the 3rd June 1949 could not be said to have taken effect until the respondent came to know about it on the 28th May 1951. Stop. The aforesaid observations are of no assistance to the case put forward by Mr. Rana. Stop. The observations made by the Supreme Court pertain to an order of dismissal passed against a public servant. Stop. Furthermore, the observations did not pertain to the territorial jurisdiction of the court in which the order of dismissal is received. Stop. The observations related to the time at which the order of dismissal became effective. Stop. हाय स्टूडेंट, डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप
इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉग इन वाली ऑप्शन आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है, और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शंस आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है। ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है, आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है। ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर, जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट की हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।